శ్రీ సాయినాథ స్తవన మంజరి అని ఈ గ్రంథాన్ని బాబాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైన శ్రీ దాసగణ మహారాజు సెప్టెంబర్ 9, 1918 సోమవారం రోజు రచించారు. సెప్టెంబర్ 12 గురువారం 1918న బాబాకి అంకితమిచ్చారు. అక్టోబర్ 15, 1918 మంగళవారం నాడున బాబా సమాధి అయ్యారు. 36 రోజుల ముందు ఈ గ్రంథాన్ని వ్రాయబడింది. ఈ గ్రంథాన్ని బాబానే స్వయంగా ఆస్వాదించారు. ఈ స్తవన మంజరి పఠించిన వారు మూర్ఖుడైన తెలివైన వాడగును, అల్పాయుష్కుడైన శతాయుష్కుడవును, నిర్ధనుడు నిశ్చయముగా కుబేరుడవుతాడు, నిస్సంతులకి సంతాన ప్రాప్తి ఇస్తుంది, వ్యాధిగ్రస్తులు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ప్రసాదిస్తుంది. శ్రీ సాయి భగవాని కృప వలన ఐహికంగా సర్వసుఖాలు అనుభవించి అంత్యమున ప్రశాంతంగా సమాధి స్థితిని తప్పక పొందగలుగుతారు. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. హే సర్వాధార మయూరేశ్వర, సర్వసాక్షి గౌరీ కుమార, హే అచింత్య లంబోదర, పాహి మాం శ్రీ గణపతే. तुम सकल गणानां च आदिईश मह्नुनि मह्नति गणेश, तुम सम्मत् सर्वसहस्रांश मंगल रूपा पालचंद्रा. हे शारदे वाग्विलासिनी, तुम सप्त सृष्टिची स्वामिनी, तुझें अस्तित्व मह्नुनि व्यवहार चालाति जगताचे. तुम ग्रंथकाराची देवता, तुम भूषण देशाचें सर्वदा, तुझी अवज्ञात अगाध सत्ता, नमो तुझसी जगदंबे. हे पूर्ण ब्रह्मां संत प्रिया, हे सगुण रूपा पंडरीराया, कृपार्णवा परम सदया, पांडुरंगा नरहरे. तुम अवज्ञांचा सूत्रधार, तुझी व्याप्ति जगभर, अवगिं शास्त्रेण विचार करीति तुझ्जु स्वरूपाचां. पुस्तक ज्ञानी जे जे कोणी, त्यां तुम न गवससि चक्रपाणि, त्या अवज्ञा मूर्खानि सप्तवाद करावाम्. तुला जानाति एक संत, बाकी चे होती कुंठित, तुला माजू दंडवत अदरिंहा अष्टांगी. हे पंचवक्त्र शंकरा, हे नररुंड मालाधरा, हे नीलकंठ दिगंबरा, ओंकार रूपा पशुपति. तुझे नाम ज्याचे वोटिंग, ताचाचें दैन्य जाया उठा उठी. ऐसा आहे दुर्जटी, महिमा तुझू नाम वाचाम. तुझू चरणां वंदुं मी हेम स्तोत्र करीतों लेखन, यासा कराविं साह्यपूर्णा, तुम सर्वदा नीलकंठा. आतां वंदुं अत्रिसुता, इंदिरा कुलदेवता, श्री तुकारामादि सकल संता, तेरीं अवज्ञा भाविकांसी. जय जयाजी साईनाथा, पतित पावन कृपावंता, तुझू पदिं टेवितो माथा, आतां वै अभय असुंदे. तुम पूर्ण ब्रह्मा सौख्यधामा, तुमची विष्णु नरोत्तमा, अर्धांगी तीज्याची उमा, तो कामारी तुमचा किं. तुम नरदेहधारी परमेश्वर, तुम ज्ञान नभीं चा दिनाकर, तुम दयेचा सागर भवरोग औषधि. तुम हीनादीनां चिंतामणि, तुम तव भक्तां सर्तुनि. तुम बुडती याम्ना भव्यतरिणी, तुम भीतांसि आश्रयाम्.
जगाचेम् आद्यकारिण् जें कां विमलचैतन्या तें तुम्हित् अहं दयादन् विस्वाहा विलासतनूचा विस्वाहा विलासा तुमचाचीम् आपणजन्मराहित् मृत्युहीना आपणां प्रत् तें च अखेर्कळूनयेत् पूर्णविचारें सोदिताम् जन्म आणीमरण् हीं दोन्ही अज्ञानजन्या दोहों पासून अलिप्त आवण् मुळीं च महाराजा पाणिजूर्यन् प्रकटलिं मह्नुना कान्ते देवोपलेलिं तें पूर्वी च होतें पूर्णभरलिं अलिं मात्र अन्तुनीं काचिन्त अलिं जीवन् मह्नुनि बादलिं अभिधान् जुरा ऐसें तिजलागून् जलाभाविं काञ्चचीम् लागला आणि आटला हें मुळीं ठावीं न जला काम किं जला कांचेला देता नह्वतिं महत्वा मुळीं कांचेसी मात्र अभिमान जीवनाचा परिपूर्ण मह्नुना तें आटतां दारुण दैन्यावस्थयेति सी नरदेहा हि काञ्चाकरी शुद्धचैतन्यविमलवारी काञ्चा अनन्तहोती जरी तरीना पालटतोया च ऐसा काञ्चा आजवर बहुज्जूलस्या भूमिवर हल्लीं अजूणा होणार पुढें हि कालावस्थेने त्या प्रत्येककांचे प्रत निराळे नांबरूपमिळत जेणें करून जगतांत ओळखत्यांची पटतसे आतां चैतन्या प्रत मी तुम मह्नुनें नावुचित काम किं जेथें ना संभवेतें दैत्वा तेंची चैतन्य निश्चयें आणि व्याप्ती चैतन्याची अवघ्या जठरायीं साची मगमीतुं या भावनेची संगत कैसी लागते मह्नुना अजन्मा आपणां मी मह्नतसें दयाधना अज्ञाननगच्या कंदना कारुण्याह्वेवं व्रजतुं हि जलमेघा गर्भीचें एकपणीं एकसाचीं अवतरणे भूवरी होतां क्याचे केत होती अनेक जें गोदेच्या पात्रांत तें गोदा मह्नुना वाहिलीं जात जें पडे कोपांत तैसी ना त्याची योग्यता संतरूपा गोदावरी ते दिला तुम्ही आहं वारी अमितिल्लर्कोपसरोवरी मह्नुनि भेत्तुं हां हां बह्वया कृतार्थ आलिं साहिजे तुम्हां प्रत सेरेन् सर्वदा जोडूना हात काम किं पवित्रता तुम्हां टायीं पात्रा मुळीं पवित्रता आळी गोदा जलासि सर्वदा नु सत्या जलान् पाहतां ते एकपणीं एकचीं पात्र गोदावरीचें
जेङ्कां ठरलें पवित्रसाचीं तें ठारणारण्यान् भूमिचे गुणदोषझुलीं साह्यपाहा मेघगर्भिं च बुधकाला जो भूमिभाग्ना बदली विबला त्याच भूमी च भागला गोदा मह्ना नीले सहस्रवेत्ता इतरत्र जें जलफडलीं त्यानीं पदगुणस्वीकारलीं रोगी खडू खराटझुलीं मूलाचें गोड असूनी तैसें गुरुवर आहेयेत षट्री पुंचीना घाना जेत क्या पवित्र पिंदा प्रत संत अभिधान सोबतसे मह्नुना संतति गोदावरी मी मह्नुतों जाजिरी अवध्या जीवन अहिकरी आपुली श्रेष्ठ योग्यतां जगदारंभपासून गोदा आहे च निर्माण तो याहि बरलें परिपूर्णा तुटीना जूली आजेवरी पहाजेहं रावणाम्री एताजुला गोदातीरिं क्या वेळा चें ते दिलवारी टिके खोटुन आजेवरी पात्र मात्रा तें चा उरलें जलसागर मिळालें पावित्र्या कायमराहिलें जाला पात्रां चें आजेवरी प्रत्येक संवत्सरीं जुनें जावूनी नवें वारीं एतपात्रा भीतिरीं तोच न्यायातुं हांटायाम् शतकतें च संवत्सर क्या शतकान्तिल साधुवर हें च जलसाचार नाना विभूतिह्यालाटा या संतरूप गोदेसी प्रथम संवत्सराची पूर आला निश्चयेंसी सनत्सनक सनंदनाचा मागुन नारद तुम्बुर ध्रुव प्रह्लादवलिन नृपवर सबरी अंगद वायुकुमार विदुर गोप गोपिका ऐसे बहुत आजवरी प्रत्येक शतका माजुरी पूर आले वरच्छावरी तें वरण्या अशक्यमीं या संप्रात्यच्छा शतकांत संतरूप गोदे प्रत आपणपूर आलंत साईनादा निश्चयें मह्नोन्तुमाच्य दिव्यचरणां मी करोते वन्दनाम् महाराज माज्जु दुर्गुणा पाहुं नका किंपीहि मीहीनतीन् अज्ञानी पातक्यांचासि कामणी मुक्त आवज्ञकुलक्षणं निं परि अन्हेर्वेर् करुं सकाम लोहा अंगीं चेदोष मनाना आणी परीस गांवीं चालेंजा वोळोळान गोदाना लावी परतपूनी माजू मदिल अवगीगान अपूल्या कृपा कटाक्षीं करुण कदा करावेगीं हरण ही चा विनंती दासाचीं परिसाचा संग होऊन लोहाचीं तें लोहपण जरीना होया गुरुवर हरण तरीही नत्व परिसासी माला पापिटेवुं नका आपणहीनत्व गेवुं नका
आपणपरिणमीलोहदेका माझी चाट आपणां ते बालक अपराध सदैव करीते परिणामाता राघवते हे हेम अनुना ज्ञानाते कृपा प्रसाद करवा हे साईनाथ सद्गुरु तुमचा माजू कल्पतरू भवाब्दीं चें भव्यतारुं तुमच्या आससी निश्चयें तुम कामधेनु चिंतामणी तुम ज्ञानसभींचा वासरमणी तुम सद्गुणांची भव्यखाणी अथवा सोपान स्वर्गीचा हे पुण्यवंता परम पावना हे शांतमूर्ती आनंदघना हे चिस्वरूपा परिपूर्णा हे भेदरहिता ज्ञान सिंधो हे विज्ञानमूर्त सर्वोत्तमा हे क्षमा शांति च निवासधाम हे भक्तजनांचा विश्रामा प्रसीद मज प्रतीं तुमचा सद्गुरु मंचिंदन तुमचा महात्मा जालंधर तुम निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर कबीर शेखनाथ तुमचा बोधला सावंता तुमचा रामदास तत्पथाम तुमचा तुकार राम साईनादा तुमचा सखा माणिक प्रभू या आपुल्य अवताराची परी आहे अगम्य साची ओळख आपुल्य जातीची होऊन ना देतां कवणातीं कोणी आपणां महणाती यवन कोणी महणाती ब्राह्मण ऐसी कृष्णा समन लीला आपण मां डीली श्री कृष्ण सा पाहून नाना प्रकारें बदले जन कोणी महणाले मधुभूषण कोणी महणाले घुराकी यशोदा महणे सुकुमार बाल कंसी महणे महाकाल उद्धव महणे प्रेम कोल व अर्जुन महणे ज्ञान जेटी तैसें गुरुवर आपणींसी जें ज्याच्या मानासी योग्य वाटेल निश्चयेंसी तें तुम्हां महनतेसें मसीद आपुलें वसतिस्थान विंदावांचुन असती कास पाक्याच्या तहा पाहून यवन महनाने वागतुं हां तैसी अग्नीच उपासना पाहुनी आपुली दयादन निश्चया होता आमुच्यमाना किं आपण हिंदू महनुनी परिकेद हे व्यावहारिक यां तें चाहती लतारिक परिजिज्ञासु भाविक क्यां ना वाटे महत्वयांची आपुली आहे ब्राह्म स्थिती जात गोतना आपुणां प्रति आपण अवज्ञांचे गुरुमूर्ती अहम आज्ञाकारिण यवन हिंदूंचे विपट अले महणुना तदैक्य कारुण्य बलिं मसीद अग्निला स्वीकारिले लीला भक्तां सुधावावया आपण जात गोतातीता सद्मंतु जीकां सतु तीचा तुम्ही साक्षातु तर्कातीत साचाकीं तर्क वितर्कां चिंघोडें चाललिं किती आपणां पुढे तेधें मारे माझे बापुडे सेद्धटीत कतील कोरुनी परिपाहुनी तुम्हांला मौनने ये धरितां माला काम किं शब्द हेच स्तुतीला साहित्य आहेत व्यवहारी
मन्नुना सिद्धे करुण जेम जेम होईला वर्णन तेम तेम सद्वदा करीन आपुल्य कृपा प्रसादीन संतांची योग्यता बली देहुवान आगळी अजाडू ज्योत्स्नाहि मुळी स्थान जवळ साधूंच्यां हिरण्यकश्यपु रावणांला देवद्वेषं मृत्यु अला तैसा एकाहि नाही घडला प्रकार संहस्ताने गोपी चैंदे दिव्यासी गाडिलीं जलां दरासी परित्या महत्यासी नाहिं वाटल विषाद उलटी राजाचा उद्धर केला चिरंजीव करुणी सोडिला ऐसा संताच्या योग्यतेला वर्णन करावे कोटवरी संत सूर्य नारायण कृपा त्यांची प्रकाशपू संत सुखदा रोहिणी रमण कौमुदीती तत्कृपा संत कस्तूरी सोज्वल कृपा त्यांचे परिमल संत इक्षुरासल रसना वाळी तत्कृपा संत सष्टु दुष्टां प्रति समसमान निश्चती उलट पाप्यवरी प्रति आलोक्यांची वसतसे गोदावरी जलांत मळकटतेंच्या दुवाया येत निर्मलतें संदुकीत राहे लंब गोदे पासुनी जें संदुकी मध्यें बसलें तें हि वस्त्र एकदां आलें होतें दुवावया लागीं बलें गोदावरीचे पात्रांत एदें संदूक वैकुंठ गोदा तुम्ही निष्ठा घाट जीवात्मे हेचफट षडू विकार मळत्यांच्या तुमाच्या पदाचे दर्शन हेंचा आहे गोदास्नान अवाग्या मळातें गालापून पावन करेणं समर्था आह्मी जन हे संसारी मळत अहों वरच्यावरी मह्नूना आह्मीचा अधिकारी संत दर्शन येण्यास्तव गौतमी माझी विपुला नीर आणि धुणे मळकट घटावर तैसेंच पडाल्य साचार केचिं हीनत्व गोदेसी तुम्ही सघन सीता तरुवर आम्ही पामदस्त साचार तापत्रयाचा मा प्रखर तासलासे चंडांसु त्याच्या तापापासून सदया करा रक्षण गुरुराया सत्कृपेची शीतल छाया आहे आपुली लोकोत्तर कृक्षा काली बैसून जरी लागते वरुणावून तरी त्या तरु लागून छाया तर कोण म्हणे तुमाच्या कृपे वीण पाहि जगांत बरें होणे नाही अर्जुनाला शेष साई सकालादल धर्मस्थौ सुग्रीव कृपेने विभीषण साधलासे राम राणाम संतां मुळेंच्या मोठेपणा लाधला श्रीहरीसी याचे वर्णन वेदांसी ना होया ऐसा ब्रह्मासी सगुणकर पूना भूमीसी लाजविले संतानं नीच दामाजीने बनविल महार वैकुंठपती रुक्मिणीवर चोकोबाने उचलान्या डोर
राबविलेत्या जगदात्मयां सन्तमहत्त्वा जानुन् पाणिवाहि जगज्जीवन् सन्तकरे च यजमान् सच्चिदानन्द प्रभुची भाराल बोलेन लगे आतां तुम च आम हम माता पिता हे सद्गुरु साईनादा शिरडी ग्राम निवासयां बाबा तुमाच्या लीलेचा कोणा ना लगे फाटसाचा ते दे माझी अर्हवाचा टीकेल सांगा कोठून जडजीवांच्या उद्धरार्थ आपण आलाम शिर्डीत पाणी ओतून पणत्यांत दिवे तुम्ही जाळिले सवा हात लाकडाची फळी मंच करुणासाची आपुल्य योग समर्थ्याची शक्ती दाविली भक्तजनां वामजूपणा कैकांचा तुम्ही केलाता हरणसाचा कित्येकांच्या रोगांचा बीमोट केलाता वूदिनी वारुण्या ऐहिक संकटे तुम्हां नाकाम्ही अशक्य वाटे पिपीलकेचे कोटून मोठे ओझे मानी गजवती ऐसो आतां गुरुराया दीनवरी करदया मी तुमाच्या लागलोलां पायां मागें ना लोटा मजलागिं तुम्ही महाराज राजेश्वर तुम्ही कुबेराचे कुबेर तुम्ही वैद्यांचे वैद्य निर्धार तुम्ही वीणना श्रेष्ठ कोणी अवांतराचे पूजेस साहित्य आहे विशेष परिपूजवया तुम्हास जगिं पदार्थ ना राहिला पहा सूर्याची या घरी सण दीपवाळी आली करी परितित्यानें जाजिरी करावी कोणत्य द्रवी सागराची समवायवां तहांजलना महिंताया वह्नी लागिं सेकवायां अग्निकोटिं यावातरी जे जे पदार्थ पूजेचे ते तुमाच्या आज्ञेचे अंश आदिंच असती साचे श्री समर्थ गुरुराया हें तत्त्वदृष्टिंचे बोनेल बोलाणे परीसा तैसिं जूलिं मने बोलालोम अनुभव विणे शब्दजाला निरर्थक व्यावहारिक पूजना जरी तुमुचें करुं मी सांगतरी तें करया नाहिं पदरीं समर्थ्य माज्यु गुरुरायां बहुतेन करुन् कल्पना करीतों तुमाच्या पूजना तें च पूजिना दयाघना मान्या कराया दासाची आतां प्रेम सुक्रूरान् तुमेचें प्रक्षालितों चिरेन् सद्भक्तिचें चिन्दास उगळून लावितों कफनी शब्दलंकाराची गाळितों ही तुम्हां साची प्रेम भावया सुनामाची माळा गळ्यां घालितों धूपकुस्सितपणाचा तुम्हां पुढीं जाळितों सदा जरीतो वायिक द्रव्याचा परिणा सुटेलु घाणात्यासी सद्गुरु वीणा इतरत्र जे जे धूप जाळितात त्या धूपद्रव्याचा तेत ऐसा प्रकार होतसी
धूपद्रव्यास अग्नि च स्पर्शहोतां क्षिणीं सा च सुवस सद्गुणुतधाङ्गीं च जातत्यालासोढुन् तुमाच्या पुडीं बुलटीं होतीं घाणातीवडि अग्निं तजलते सद्गुणुवुरति पाहण्येतीं अक्षयां चे जगन् मणिं चें जलाल्या कुत्सितपन् मलिरहित होयीलमन् गंगे चें गेल्या गडुलफन् मगति पवित्र सहजजी दीपमाया मोहा च पाजलितोम्नि हासा च तेनें वैराग्य प्रभे च होवो गुरुवरलाभमसि शुद्ध निष्ठे चें सिंहासनं देतों वसवयाकारें त्याचिं करे नियां ग्रहन् भक्ति नैवेद्य स्वीकार भक्ति नैवेद्य तुम्हि बाणीं तदस्त्रमाला पाजणीं कां कीं नीतुमचें तान्हीं पयावरि हक्कमाजु मान्माझें दक्षिणा तिमि अर्पितों आपणां जेणीं सुरेल कर्तपणां कसा चाहि मजकडे आतां प्रार्थनपूर्वकमात्रा घालितों मी दण्डवत् ते मान्या होवो आपणां प्रात् पुण्यश्लोका सायिनादां प्रार्थनाष्टकम् शान्तचित्ता महाप्रज्ञा सायिनादा दयादना दया सिन्धो सत्स्वरूपा मायतमा विनाशिना जातगोतातीत सिद्धा अचिन्त्य करुणालयां पाहि मां नादा शिरडी ग्राम निवासया श्रीज्ञानार्कज्ञानदात्या सर्वमङ्गलकारकाम् भक्तचित्तामराळहे शरणागतरक्षका सृष्टिकर्ता विरञ्चितुं पातातुम् इन्दिरापतिः जगत्त्रयलया नेता रुद्रतो तुं च निश्चतिं तुजवीणमृता कोटिं तावनाया महीवरी सर्वज्ञातुं सायिनादा सर्वां च हृदयान्तरिं क्षमा सर्वापराधां च करविं हेञ्चि मागणीं अभक्ति संशयाच्छत्या लाटशीघ्रनिवारिणी तुं धेनु वत्स्यामि तान्हीं तुं इन्दुचन्द्रकान्तमी स्वर्णादिरूप तत्पादा आधरीं दासहानमी ते आतां सिरिं माजु कृपे च करपञ्जर शोकचिन्ता निवारावि गणुहा तव किङ्कर या प्रार्थनाष्टकीं करुं मी करोतां साष्टाङ्गसमन् पापताप अणिदैन्या माजिं निवार लवलाहिं पुनस्तोत्रम् तुं गायामि वासरुं तुं मायामि लेकरुं माजिं विषयीं नकोदरुं कठोरतमानसिं तुं मलयागिरिचन्दन् मी कांटेरी जुडपाजान् तुं पवित्र गोदा जीवन मी महापातकी तुझीं दर्शन होवुनियां दुर्बुद्धि घाणमाजेठाया राहिल्या तैसि च गुरुराया चन्दन तुजालकोणमह्ने कस्तूरीच्यात् सहवासे मृत्तिकामूलपावतसे पुष्पासङ्गे जडतसे वाससूत्रामस्तके दोरां चीति हि चरीति तेज्या गोष्ठी ग्रहणकरीति त्या वस्तु पाववीति
ते महत्सदाकारिणीं भस्मकौपिनी नन्दी च शिवीं केला सङ्ग्रहसा च मह्नुनात्या वस्तुं च गौरवहोता चेहुंकडी गोपरञ्जनी साटी बृन्दावनी यमुना तटी कालखेलाल जगजटी तो हि मान्या जूला बुधां तैसामी तों दुराचारी परि आहें तुमाच पदरिं मह्नुना विचार अन्तरिं याचा करोः गुरुरायाम् ऐहिका वा पारमार्थिं ज्या वस्तुं सुमानीला सुखां माजे मनहिं निहस्सेंक क्या पुरविणिं गुरुरायाम् अपूल्या कृपेणं ऐसेंकर मनालागी आवर बोट्केवल्य सागर क्षारोदकपणाची नसी भीती सागर गोट्कारुण्यची शक्ति आपणं मध्यें साची मह्नुना दासगणूची याचना हि पूरी करां कमीपण जो माजू तो अवघात्वजू सिद्धा चातुं अहिस्राजा कमीपणा न बरवा तुजसी आतां कलस्तव बोलूपार तुमचा माजू आधार शिशुमत्ये छा कडेवर असल्या निर्भया जहजती असोया स्तोत्रासि जे वाचतील प्रेमींसि क्यां च त्वां च कामनेसि तुं हि पुरवा महाराजा ये स्तोत्रात् अपुलाव्रव हाचि असो निरन्तर पठन कर्त्यां चीं त्रितापधूर वाह्नीं एकसंवत्सरी शुचिर्भूता होवून नित्यस्तोत्राकरावीं पठन् शुद्ध भावाटे पूना आपूलीय मानसी हेम असक्या असलें जरी तरी प्रत्येक गुरुवारीं सद्गुरुमूर्ति अंतरिं अणुन पाठ करवा तें हि असक्य असलस्य प्रत्येक एकादशीस् वाचनीं या स्तोत्रास् कौतुकत्याचीं पहानयां स्तोत्रपाठकां उत्तमगति अन्तिं देयीला गुरुमूर्ति ऐहिक वाहन सत्परगति त्याजी पुरपूना स्तोत्रे हो या स्तोत्राचा पारायणीं मंदबुद्धि होतिं सहणां कोणा आयुष्य असल्यावुणीं तो पटेणं होयासेतयुं धनहीनात असल्या पदरिं कुबेरे ये वूणाराबेलघरिं हिं स्तोत्रा वाचल्यवरिं सत्य त्रिवाचा संततिहीना संतान होयीला स्तोत्र केल्या पठन् स्तोत्रपाठकां चे संपूर्ण रोगजातील दिगंतरा भया चिंता निवेल मानमान्यता वाडेल अविनाश ब्रह्म कळेल नित्य स्तोत्राचा पारायणीं दरा बुधा हो स्तोत्रा विसीं विश्वास अपूल्या मानसीं तर्क वितर्क कुकल्पनेसी जागामुळी देवूनका शिर्डी क्षेत्राची वारी करीं पाया बाबांचे चित्तिंदरा जो अनादांचा सोयारा भक्त काम कल्पद्रुमां त्याच्या प्रेरणे करून हें स्तोत्रे केलीं लेखन मज पामराहातून ऐसी रचना होया कैसी सेके अटरासें चालीसांत भाद्रपद शुद्ध पक्षांत तिथि गणेश चतुर्थी सत्या सोमवारीं द्वितीय प्रहरीं
శ్రీ సాయినాథస్తవ మంజరి పూర్ణజూళీ మహేశ్వరి పునీతా నర్మదే చాతీరి శ్రీ అహల్యే సన్నిధా మహేశ్వర క్షేత్ర బలిం స్తోత్రే తేదిం పూర్ణజులిం ప్రత్యేక శబ్దాసి వదవిలిం శ్రీ సాయినాథిం శిరోన్మణిం లేఖనా శిష్య దామోదర్ యాసఝాలా సాచార్ దాసగణోమి కింకారి అవజ్ఞా సంతమహంతా చ స్వస్తి శ్రీ సాయినాథస్తవన మంజరి తారకాహో భవసాగరి హేజా వినవి అత్యాదరి దాసగణో శ్రీ పాండురంగా. ఓం శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. ఈ స్తవ మంజరిని పఠించిన వారికి, విన్నవారికి మూర్ఖుడు తెలివైన వాడగును, అల్పాయుష్కుడు శతాయుష్కుడగును, నిర్ధనుడు నిశ్చయముగా కుబేరుడవుతాడు, నిస్సంతులకు సంతాన ప్రాప్తి ఇస్తుంది, వ్యాధిగ్రస్తులకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ప్రసాదిస్తుంది. శ్రీ సాయి భగవాని కృప వలన ఐహికంగా సర్వసుఖాలు అనుభవించి అంత్యమున ప్రశాంతముగా సమాధి స్థితిని తప్పక పొందగలుగుతారు. సర్వం సాయినాథ పాదార విందార్పణమస్తు.